ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా మీరు మీ బిజినెస్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఇంటర్వ్యూస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కోసం కూడా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. की है, इसके लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं. सही मायनों में सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि. आज बेहद खास दिन है. पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है. ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है. ये ऊंचाई, ये बुलंदी युवाओं को प्रेरित करती है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है, जो इतना ही विराट है. इन आकांक्षाओं का पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत. और इस समय हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सरदार पटेल को. Floral tributes being showered from the skies, a dedication to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. The Honorable Prime Minister has always looked upon Sardar Patel as his hero and has endeavored to bring the Sardar's ideals to the forefront through various programs all over the country in which the youth of India participate. Sardar Patel has been given his due place in the national consciousness. The Statue of Unity symbolizes the national, spiritual, historical and academic values of the people of India. आज एकता दिवस पर श्रद्धा का भाव सबसे ऊपर और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पद पूजा, कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित. भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के कारण देश और दुनिया उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानती है. ऐसे विराट व्यक्तित्व की विराट प्रतिमा केवड़िया में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. The Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to the unity of India. No mean task that, when we look at the context and the time that this happened, and also the fact that there were adversaries to India at that time. And in fact, the members of Parliament
made it quite clear that the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was so great that many of them didn't quite understand what he was doing until it was finally achieved. He was called the Bismarck of India, and the wisdom of the Bismarck of India had been too much for them to understand, is what they had said, until it was finally achieved. And we are all the beneficiaries of that. India now a union of... Please like and subscribe to Telugu 99 News. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు 99 న్యూస్. హలో, నా పేరు రాజీవ్ తెలుగా. తెలుగు 99 న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody, please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. తెలుగు 99 న్యూస్ ఛానల్కి శుభాకాంక్షలు. మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి.